Namaste and welcome to Simple Education. So let's start the presentation. I hope you can see these words, that is nothing but generating novel ideas which are useful, innovation, ingenious, invention, unusual और constructing original thoughts. तो ये सभी जो words है इनके लिए let us think of one single word for all these things. इन सभी का मिला के एक single word कोई हो सकता है. Please think. Okay, so yes, you must have thought correctly. So yes, we are going to study about creativity. So in this particular presentation हम जो पढ़ने वाले हैं कि creativity क्या है, that is meaning, definition, nature as well as components of creativity. हम 4 P's of creativity भी देखेंगे and traits of individual who is having creativity, process of creativity, differences and importance of creativity, principles of as a teacher, the guidelines and principles to follow creativity करेंगे, discuss करेंगे, and role of a teacher and various activities which can be done to enhance the creativity of the learner, and finally few questions related to this topic creativity. Fine. So let us start with the meaning of creativity from the next slide. So creativity is coming from the word creo, which means to create or to make. Fine. So meaning of creativity देख लेते हैं. Creativity is a unique characteristics of human mind. तो creativity हर एक human mind के अंदर है, and it is a unique characteristic, something which is different, something which is very very important in human life. Fine. It is creating something innovative and unique. Creativity as is the capacity of an individual to create, discover or produce new ideas or objects, including the rearrangement of what is already known to him. तो creativity क्या है? It is like कुछ नया, कुछ innovative बनाना, कुछ ऐसे न्यू आइडियाज के थ्रू प्रोसेसेस यूज करके कुछ प्रोडक्ट नया बनाना या सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो इट इज नॉट ओनली कि कंप्लीटली न्यू बनाना, वो तो है ही क्रिएटिविटी, ऑल्सो समथिंग विच इज ऑलरेडी देयर and now again doing it in a different manner, reshaping it, rearranging it and again bringing something new. So that is also creativity. Say for example हम research करते हैं. Research is nothing but already जो search किया है उसके ऊपर फिर से research करते हैं to find something new, to solve the problem in a different manner. So that is nothing but creativity. Creativity is generation of unexpected and useful ideas, and the degree of one's creativity can be judged on the basis of its originality and relevance. तो क्रिएटिविटी क्या है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता था, बट यस द पर्सन हैज शोन दैट यस इट इज पॉसिबल एंड नाउ इट इज यूजफुल टू एवरीवन. सो ऐसे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे ह्यूमन लाइफ में कि वेयर people have discovered by using their creativity various important things, solve various problems of life as well as society or the world by using creativity. Say for example, the mobile device which we are using earlier, no one must have thought कि ऐसा कुछ device invent या create हो सकता है, but now we all are using. So therefore creativity is something कि generation of new ideas and bringing something extremely new जो शायद कभी सोचा ही नहीं है. And yes, it is relevant, it has to be utility based. And yes, basically creativity judge कैसे कर सकते हैं कि किसने कितनी अच्छी creativity दिखाई है, by making sure कि वो creativity जो है कितनी original है as well as relevant कितना है, whether it is useful or not. I hope till here creativity का meaning clear हो गया है. Let us proceed with the other part of creativity. Creativity is tendency to generate alternatives that is useful in solving the problem. तो alternate generate करना, different ways, different options to solve that particular problem, that is nothing but creativity. Creativity is present in all the areas of life. So creativity हर जगह, ऐसे नहीं है कि खाली inventions में ही creativity है. Creativity problem solving में है, creativity cooking में है, dancing में है, various different forms of art के अंदर creativity है, sciences के अंदर, humanities के अंदर,
everywhere. The scope of creativity is extremely large. हर जगह, the way we present our things is also something creativity. So creativity is there everywhere. Fine. Creativity involves two processes. Important दो चीजें creativity के अंदर होनी चाहिए. Very first is thinking and then producing. So this means कि अगर किसी के पास आइडिया है बट उसको एक्ट ही नहीं कर रहा है, एक्शन में नहीं ले रहा है, तो नो, क्रिएटिविटी इज नॉट जस्ट ओनली इमेजिनेशन. मैं खाली सोचती रहूं, इमेजिन करती रहूं, डे ड्रीम करती रहूं, दैट इज नॉट क्रिएटिविटी. Creativity is, yes, you're thinking in a divergent way, you're thinking very differently, and then putting it in the action. So that is nothing but creativity. So I hope till here it is clear. So let us proceed to the last part of meaning of creativity. Creativity is nothing but thinking outside the box. Yeah, thinking outside the frame. It is something which is very worthwhile way of thinking and making sure कि कुछ अलग सोच के कुछ नया create करना, कुछ नए तरीके से problem को resolve करना. I hope till here the meaning of creativity is clear. Let us now proceed towards the definition of creativity. So it's time to see the thoughts of various psychologists who have given the meaning of creativity. So let's see the definition one by one. Very first definition is given by B.F. Skinner. Creative thinking means that the prediction and or inferences for the individual are new, original, ingenious, unusual. The creative thinker is one who explores new ideas, new areas and make new observation, new prediction and new inferences. So as per B.F. Skinner, creativity is something where a person makes prediction which is new. कुछ future में क्या होने वाला है, future product क्या बनने वाला है. He thinks about it, he concludes it, he try to interpret in something which is very original, something which is very novel, as well as कभी भी वो चीज देखी नहीं गई है. So he tried to see anything which has been shown to him in a very different way so that something new can be produced. He thinks in a different manner. So this is what is creativity as per B.F. Skinner. Let us move to the second definition given by Dravdal. Creativity is the capacity of a person to produce compositions, products or ideas which are essentially new or novel and previously unknown to the producer. So यहाँ पे भी वही चीज बोली है, but major चीज जो difference है that is it is previously unknown. कभी पता ही नहीं था जो produce भी कर रहा है, जो create भी कर रहा है कि वो ऐसा कुछ नया create कर सकता है. So anything which is new, novel, कभी वो चीज देखी नहीं है and something new has been produced. Some compositions, some products, some objects, some ideas which are very much new एंड वो कभी भी देखे नहीं गए हैं, वो प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूसर. नॉट इवन वो प्रोड्यूसर को पता होता है कि या वो क्रिएटर को पता होता है कि ही इज गोइंग टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर आइडिया और ऑब्जेक्ट. And the last definition in this presentation, that is by Guilford. Creativity is the capacity to produce ideas that are both new and useful through divergent thinking. तो ये सिंपल इंफॉर्मेशन है कि क्रिएटिविटी क्या है, जिससे नए आइडियाज हो जो यूटिलिटी बेस्ड हो, यूजफुल हो और अच्छी यूज के लिए हो बेसिकली. ठीक है. एंड यस, इट इज थ्रू डाइवर्जेंट थिंकिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस ways to solve the problem, the person thinks in a different way and brings creativity. So these are few of the definitions of creativity. There are number of definitions related to creativity. In this presentation we'll be talking about these three, and I hope इससे आपको समझ में आ गया होगा कि creativity क्या है. Now let us proceed towards the nature of creativity from the next slide. ओके तो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ क्रिएटिविटी. इसको हम फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं. लेट अस सी ईच वन बाय वन. वेरी फर्स्ट इज क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स फ्लेक्सिबिलिटी. तो क्रिएटिविटी इज नॉट रिजिड थिंकिंग या क्लोज थिंकिंग. इट इज ऑलवेज अ फ्रीडम इज गिवन टू अ क्रिएटर to respond in a very multiple way so that the things can be solved in a very creative and different manner. या फिर कोई पर्टिकुलर कुछ ऑब्जेक्ट बना रहा है या कुछ आइडिया है, एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड विच द पर्सन इज वर्किंग, तो ऑलवेज अ फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन कि अच्छा ये नहीं चल रहा है तो नेक्स्ट क्या बन सकता है, किस तरह से और रिजॉल्व कर सकते हैं. सो दैट डिफरेंट आइडियाज एट टाइम कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ अ क्रिएटर.
So it is like कि creators are having flexibility. Next is it is innovative and original. तो creativity demands originality and innovativeness. It is not कि किसी का copy कर लिया या किसी को follow कर दिया as it is. It is always bringing something new, creating something new, and there is always a conflict of ideas because it involves flexibility कि कौन सा idea कौन सा appropriate होगा. So continuously the person is trying to use different ways of thinking to create something which is very much real and original and useful. The next point under nature of creativity, it involves qualities. अब creativity में बहुत सारी qualities है. एक हमने पहली सबसे first में देखी थी, that is flexibility. Next is universality, that is सभी के पास ये creativity है जो हमने initially सबसे first slide में देख लिया कि each and every human being has creativity, have creativity. Then is novelty, newness है ना. Also adventurousness, that is क्रिएटिविटी डिमांड्स बोल्ड थिंकिंग कि कोई नहीं कर रहा है तो मैं कैसे करूँ, वो हेजिटेशन नहीं. इट इज ऑलवेज अ रेडीनेस टू step ahead, to take initiative and think in a different manner and solve the problem, explore new things, discover new things. It is also open mindedness as well as divergent thinking is involved, जो हमने पहले ही देख लिया है. It is not a closed thinking and yes spontaneous reaction. It is like no one is forcing the person to do that. It is अपने आप inbuilt है and it is like on all of a sudden sometimes it happens कि person shows his creativity. So as soon as the problem arises, a different way to solve that problem is always been seen in the creative person. Next is nature of creativity. There is presence of knowledge. तो creativity demands कि knowledge हो person के अंदर. तो intelligence या वो content related जिसमें भी वो सोच रहे हैं ideas, उसकी knowledge appropriate होनी चाहिए. Also it is sensitiveness towards the problem and works on identifying the difficulty, searching for solutions and testing hypothesis, again retesting them, formulate करना hypothesis को, फिर test करना, retest करना, and also अगर demand करता है तो possibly retest करने के बाद पता पड़ा कि change करना है तो again modify करना चीजों को, and finally communicating the creative results. So it is creativity demands all these steps, all this process, so that nothing has been missed. Creativity में ये है कि person tries to identify exactly what is the problem and works on it extremely tirelessly so that it can be solved in a proper manner, in a original and creative manner. Next point under creativity, nature of creativity. Creativity is the power of curiosity and imagination and also checking the correctness of it. So curiosity और imagination हर एक creative person के अंदर होनी चाहिए. And उसके अलावा because creativity is imagination वो है, उसके साथ एक और हमने देखा कि वो useful है कि नहीं, कितना relevant है, is it actually going to work, तो correctness क्या है, is it right. तो it's like creativity is something which is going beyond mainstream way of usual एक ही तरह से सोचना. It is always a person is curious, they continuously ask question why this is happening, how can I do it in a different way, and they resolve the things by using their imagination and then also check कि वो correct है कि नहीं, वो सच में useful है कि नहीं, वो आगे काम में आएगा कि नहीं, and all those things in that particular field. Next point under the nature of creativity is that it is always goal directed way of thinking. तो creativity ऐसे नहीं है कि बस बैठ के ऐसे ही सोचना है. It is always to bring something new. It is always purposeful activity. Thinking as such is a purposeful activity. So creative thinking is also having goal. तो goal either for that particular individual person या फिर for the whole society. So there is always a goal to find out. अच्छा ये चीज ढूंढनी है. How to say for example how to this अभी रिसेंटली जो चेनाब ब्रिज जो डेवलप हुआ है इन जम्मू एंड कश्मीर इन दिस ईयर 2025 इनॉग्रेट हुआ है. सो समवन हैव थॉट ना कि किस तरह से इसको कनेक्ट किया जाए. सो आज ये रेलवे ब्रिज इतना वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बन गया.
सो दिस इज कि हर समय क्रिएटिविटी के अंदर कोई गोल है एंड द पर्पस इज एंड द पर्सन इज वर्किंग टू अचीव दैट पर्टिकुलर पर्पस और गोल. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज अ कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिएटर्स ईगो इन हिज और हर क्रिएटिव एक्सप्रेशन. This means कि it is a source of joy and satisfaction for the creator and takes pride in his creation by sometimes stating it's my creation. His philosophy of life, thinking and personality is totally reflected in his creative work. तो क्रिएटिविटी में क्या है कि अगर कोई पर्सन क्रिएटिव वर्क कर रहा है तो उसका ईगो भी इसमें इन्वॉल्व है, उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी, उसका वे ऑफ थिंकिंग एज वेल एज हिज होल फिलोसफी ऑफ लाइफ इज रिफ्लेक्टेड विद हिज क्रिएटिव वर्क. सो आप अगर किसी की कोई शायरी या पोयम भी देख ले या स्टोरीज देख ले, डांस फॉर्म देख ले, डिफरेंट अगर कुछ होगा, कुछ क्रिएटिविटी, तो यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सन's philosophy through it. So therefore it is always ego involvement, and sometimes the creator feels ki yes, this is my work. They feel extremely happy and satisfied after doing that particular work in a creative manner. So this is what is creativity. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिविटी का जो है, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में देख लिया है कि इट इज हैविंग अ वाइड स्कोप. ठीक है, तो ये हर एक फील्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो क्रिएटिविटी कवर्स ऑल द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. क्रिएटिविटी एक्सप्रेशन कैन नॉट बी बाउंडेड अंडर एनी वन पर्टिकुलर फील्ड और बाउंड्री. इट हैज अ वाइड स्कोप इन द फील्ड ऑफ साइंस, इनोवेशंस या inventions, dance, music, drama, literature, poem, stories. Also we can see leadership में creativity, because it is very much essential, because when leaders have to handle volunteers or any subordinates, we need creativity. When we have to take decisions, we need creativity. Then there is business persons, professionals, everyone needs creativity. When we talk about professions, teaching profession needs creativity. Rightly said? Yes. So these are the areas कि हर जगह creativity की ज़रूरत है. In this 21st century also we feel कि अच्छा ये सारी चीज़ें तो human beings ने create कर ली, अब और कुछ नहीं चाहिए. I don't think we don't want anything new. It's always we are looking forward something new. तो something new करने के लिए we need to think in a creative manner. So therefore creativity is always present in all the human beings, and it is there in all the different fields of life. Even problem solving, any personal problem solving, we need creativity. Next part is creativity और इंटेलिजेंस की बात करते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एन इंटेलिजेंट पर्सन इज ऑलवेज क्रिएटिव. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कोई इंटेलिजेंट है तो वो क्रिएटिव भी होगा, ज़रूरी नहीं है. लेकिन ठीक है, प्लीज लिसन टू इट वेरी केयरफुली. बट अ क्रिएटिव पर्सन शुड हैव एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. तो क्रिएटिव पर्सन को एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया था कि देयर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ नॉलेज. ओके, सो एक एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन भी हाईली क्रिएटिव हो सकता है, एंड ऑल्सो एक हाईली इंटेलिजेंट पर्सन बहुत हाईली क्रिएटिव होगा, जरूरी नहीं है. ठीक है, सो जस्ट टेक केयर कि क्रिएटिव पर्सन के अंदर थोड़ी सी एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होनी चाहिए. ऑल्सो मोर क्रिएटिव पर्सन होगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, दैट इज ऑल्सो नॉट necessary. Now why we need intelligence? Because creativity is the combination of both divergent and convergent thinking. तो creativity में हमें दोनों चीज चाहिए. When we will study, when we'll come to the process of creativity, we'll understand कि divergent thinking तो चाहिए, different ways of thinking, but now it is time to synthesize and come to a particular point कि कौन सा the best solution है. So therefore we need convergent या फिर something related to critical thinking. So therefore creativity में थोड़ी बहुत intelligence चाहिए. So these were the few of the features related to the nature of creativity in this slide. Let us continue with the nature of creativity in the coming slide. So we are continuing the nature of या फिर characteristics या features of creativity. Very next point is it is universal in nature, जो हमने already बात कर ली है कि सभी human beings में है. Not to exactly specify, that is, creativity is not having barriers of age, location, sex, socio-economic conditions and culture. Creative person can be found in any environment. So this is very much clear, which gives the clarity कि creative person हर human being है, वो कोई भी particular gender का हो सकता है, any socio-economic background, any particular environment,
कोई भी प्लेस, एज, ये सब का कोई बैरियर नहीं है क्रिएटिविटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज creativity is either innate or acquired. It is sometimes the gift of nature while sometimes learned from the environment. तो creativity is like not necessary कि खाली inborn talent ही है, innate है surely, sometimes it is also because that particular environment is provided, therefore a person becomes creative. So with the help of education, training and experience also sometimes people become highly creative. So creativity में दोनों चीज है, innate as well as acquired, जिसको हम यहाँ पे वापस क्लियर करेंगे कि creativity is not a special people doing special things. We all are creative and creativity can be nurtured by training or education. So creativity can be learned, it can be taught to the students and can be developed. So therefore creativity is both innate as well as एक अच्छा environment मिले, एक free environment मिले जहाँ पे बच्चे mistakes कर सकते हैं, उनको कोई fear नहीं है, तो वो mistake से सीख के वो surely creative बन सकते हैं. Next point is creativity is the ability to produce something unique. But this novelty does not necessarily imply in production of totally inexperienced ideas. That means rearranging the various different existing particular ideas, known facts, principles, or any particular work, and we can modify those previously work various techniques or methodologies and then act. This can also be an act of creativity. So therefore it means कि creativity जो है जिसमें कि नेचुरली एक नई चीज तो बनानी है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें ही थोड़ा मॉडिफाई करके एक डिफरेंट चीज बना ली. सो देयरफॉर क्रिएटिविटी इज बोथ कंप्लीटली न्यू एज वेल एज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके न्यू टेक्निक्स बना ली. Next point is creativity is a kind of adventurous and open thinking. It is not rigid. It calls an individual to openly and willingly express his or her imagination and to function freely. So creativity जो कि हमने already देख लिया है एक very first slide में, initial slide में, it is adventurous, ठीक है? It is open thinking. Because when we go for any adventurous टूर हम देखते हैं कि कितनी रिस्क इन्वॉल्व है तो भी हम वो काम करते हैं. तो क्रिएटिव पीपल आर ऑलवेज लाइक दैट, दे नो कि इसमें शायद वो सक्सेसफुल होंगे शायद नहीं होंगे, बट स्टिल दे गो एंड दे वर्क ऑन इट एंड मैक्सिमम टाइम वो सक्सेसफुल होते हैं. ऑल द साइंटिस्ट, ऑल द इन्वेंशंस व्हिच आर डन इन अ country, in the whole world, everywhere creativity was involved because people were adventurous, they were ready to take risks, they had bold thinking. So therefore जहाँ पे imaginations को action में लिया जाता है, that is what is creativity. It is a means as well as end. So that means creativity process भी है as well as product भी है. Process because उसमें सारी thinking involved है, both creative thinking, divergent thinking as well as the critical thinking involved. तो बहुत सारी चीजें इसमें involved है. It is a complete process. एक ही exact एक ही उसमें नहीं हो जाएगा. And yes, एक product भी निकलता है, एक आइडिया भी आ जाता है जिसके ऊपर लोग काम करते हैं अच्छे से एंड एक अच्छा आउटकम निकलता है, क्रिएटिव आउटकम. रिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी और फॉर्मल एजुकेशन है कि नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? वेरी राइट, देयर इज नो रिलेशनशिप, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन कि अगर फॉर्मल एजुकेशन किया है तभी वो पर्सन क्रिएटिव होगा. देर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कि पीपल आर नॉट गेटिंग फॉर्मल एजुकेशन बट दे शो वेरी क्रिएटिविटी इन द, से फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मिंग देयर इंस्ट्रूमेंट, दैट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना and various other fields. Also it has been said that no significant relationship has been recorded between the individual's creative talent and its school performance. So school के achievement marks, that is achievement test के marks, exam के test भी कहीं पे भी इस तरह का पॉजिटिव रिलेशन नहीं दिखाते हैं कि क्रिएटिविटी और अचीवमेंट टेस्ट अगर अच्छा है तो पर्सन बहुत क्रिएटिव है. सो देयरफॉर इट इज़ लाइक कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी मिले, फॉर्मल एजुकेशन में अगर पढ़ भी रहा है बच्चा पर उसके अचीवमेंट स्कोर्स इतने अच्छे नहीं होंगे, बट स्टिल द पर्सन कैन बी हाईली क्रिएटिव. नेक्स्ट पॉइंट इज सोशली क्रिएटिविटी
किस तरह से कनेक्टेड है. क्रिएटिव इंडिविजुअल्स आर मोर इंट्रोवर्ट देन एक्सट्रोवर्ट. दे डज नॉट केयर फॉर सोशल अप्रूवल but likes to utilize their capabilities for the satisfaction of their creative urge. तो usually देखा गया है as per the researchers कि creative people are quite introvert and they usually do not gel with the people in the society. वो सोचते हैं उससे अच्छा वो हम अपना टाइम दूसरे काम में लगाए जहाँ पे वो अपनी क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज यूटिलाइज करके कुछ अच्छा क्रिएटिव प्रोड्यूस कर सके. The last point under the nature and features of creativity, age factor does not affect the creativity of an individual. So as said, creativity is universal in nature. तो yes, कोई भी creative हो सकता है. एक छोटा से छोटा बच्चा और एक बड़े से बड़ा adult भी creative हो सकता है. We have seen number of cases या रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ पे छोटे बच्चों ने एक इतना अलग कुछ सोच के एक अलग ही चीज बना ली, एक अलग ही से फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्टिक लैंडस्केप बना लिया, एक इन्वेंशन कर लिया, एक अच्छी सी ब्यूटीफुल पोयम लिख ली या एक बिजनेस आइडिया दिखाया. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स कि हर एक पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी एंड एज डजंट मैटर अंडर क्रिएटिविटी. So these are the few points under the nature of creativity. I hope these are clear. Let us proceed to the other part of creativity. ओके, नेचर ऑफ क्रिएटिविटी हमने देख लिया. अभी क्विकली विल सी द ट्रेट्स ऑफ क्रिएटिव पीपल, क्योंकि नेचर ऑफ क्रिएटिव ट्रेट्स ऑफ क्रिएटिव पीपल समवेयर कॉमन ही होंगे, सेम ही होंगे, बट अगर आपको एग्जाम में इस तरह से आता है, therefore I have shown this particular slide, prepared this slide. They have high degree of intrinsic motivation. तो as said earlier also they are self motivated. They want कि कुछ नए आइडियाज आए, कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज आए, and they are ready to accept clutter and make sure कि वो clutter को ठीक करे. They always have inner urge to create something new. Next point is ready to take risks and very adventurous. So they have that stamina, they have that automatic energy and courageousness कि वो risk ले सके और उसके ऊपर work कर सके. Next point is ability to question. So creative people are very much curious, जो हमने पहले भी देखा. तो curiosity raises questioning. So they always ask question, they ask other people's viewpoint, they also are aware of other people's viewpoint, and they take care कि किसको किस तरह से और अच्छा बना सके, कोई प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व कर सके by asking different questions, sometimes to other people, sometimes to themselves, sometimes to the environment, and finding out the solution. Next point is have divergent thinking style, and also they have something, a thinking style which is explorative. So they have this इनबिल्ड क्वालिटी इन देम. ऑल्सो एनवायरमेंट भी सिखाता है श्योरली कि वो कुछ अलग तरह से सोचे, कुछ डिफरेंट सोचे, नॉट व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग, एंड उनकी जो थिंकिंग है वो भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टू फाइंड आउट अ न्यू वे टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Next point is self-contained. They are very self-contained people, self-reliant. They have self-confidence because इतना बड़ा risk ले रहे हैं, adventurous है तो naturally self-confidence में. Also they are quite self-control. Sometimes थोड़ा सा self-consciousness आ जाता है. They are sometimes as said introvert है तो कभी-कभी they are not so social or sometimes they feel shy in public. ठीक है. Next point is they are independent decision makers. They take firm independent decisions and they are very much aware कि वो कौन सा काम सही कर रहे हैं कि नहीं. So therefore creative people are someone who rely on their own decisions. Next point is they are fault finders. So creative people जैसे कि है, they have ability to questions. They ask people why this is happening. They experience, they are quite suspicious, they are dissatisfied. इतना सा इस तरह से सोल्यूशन नहीं चाहिए, वी वांट इन अ डिफरेंट वे. सो दे आर क्वाइट एक्सपीरियंस एंड उनको अगर कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो दे आस्क वेरियस क्वेश्चन एंड दे फाइंड फॉल्ट कि ये चीज इस तरह से हो सकती है. दे कीप ऑन जनरेटिंग न्यू आइडियाज एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन अ बेटर मैनर. डोमिनेंट. यूजुअली क्रिएटिव पीपल आर डोमिनेंट. इट इज यहाँ पे लिखा है डोमिनेंट, यूजुअली इट इज नॉट कि सभी में देखा गया है. दे हैव देयर ओन रूल्स बिकॉज क्योंकि वो क्रिएटिव है तो वो अपने ओन रूल्स बनाते हैं. जो रूल्स बने हुए हैं
बेसिक रूल्स नहीं तोड़ते हैं, बट टू मेक श्योर कि वो आइडिया वर्क करे, एक्शन में लेके एक यूजफुल आइडिया निकाले, इसके लिए कभी कभी थोड़े रूल्स वो ब्रेक भी कर देते हैं, एंड दे मेक श्योर कि दे प्रिपेयर समथिंग न्यू विच इज यूजफुल फॉर एवरीवन. So therefore they are sometimes dominant or rebellious. Next point is they are impulsively sensitive. Sometimes creative people are impulsively sensitive, low emotional stability उनके अंदर दिखने को मिलती है, but usually उनके अंदर ये mood swings काफी कम दिखते हैं. Then is they are very much having vision, so they know, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दे अंडरस्टैंड कि वो जिस पे काम कर रहे हैं उसमें कितने लेवल तक सक्सेस मिलेगा, एंड दे आर हैविंग फोरसाइटेडनेस एंड क्वाइट गोल ओरिएंटेड. दे अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसको किस तरह से अचीव कर देंगे, किस तरह से वो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी दिखाते हैं to make sure that the final product is shown and useful, is prepared and is useful. So it is like इमेजिनेशन से एक्शन की तरफ मूव करने का काम उनको क्लियरली पता है. दे आर हाईली फोरसाइटेड पीपल. देन इज दे आर इंट्रोवर्ट, जो हमने पहले से ही देख लिया था. दे आर क्वाइट साइलेंट इन नेचर एंड दे डज देयर वर्क इन अ साइलेंट मैनर. Next point is they are intuitive. That is, they are having the child's like in intuitiveness, spontaneousness कि वो तुरंत वो automatically वो काम करते हैं, and they are very much having that ability to see the relationship, they associate, they connect the things very quickly, and yes, they are quite humorous also, and they are having good health. Next point is they are industrious and committed. So they are passionate to do their work. They are quite enthusiastic. क्योंकि हमने पहले से देख रखा है that they are self motivated. तो वो committed है अपने काम के लिए, dedicated है, and they work for the वर्क विच इज बिन अलॉटेड, और या फिर जो भी काम वो कर रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से सेल्फ मोटिवेटेड है, और कभी भी बोर नहीं हो जाते हैं वो काम करते करते, जैसे कि हम कभी कभी हो जाते हैं. लास्टली दे हैव बोथ एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन. तो दे आर ऑल्सो सीन दैट दे discuss with various people, they talk with various people, but also extrovert के अलावा वो introvert भी है. They are also very humble, sometimes they are very proud in nature because वो ego involvement कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है. And yes, they have some inner we can say thought कि they should influence people. So these are the few of the traits of creative people. Not necessary again telling कि as it is होता है, but ऐसे traits find किए गए हैं creative learners या people के अंदर जिनके अंदर ये features या characteristics दिखे हैं. Fine. So let us proceed to the other part of creativity from the next slide. So अब देखते हैं कि क्रिएटिविटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स या एबिलिटीज या क्वालिटीज दिखने को मिलती हैं. सो एज सच हमने नेचर और इसमें ट्रेट्स में देख लिया है. लेट अस नाउ क्विकली अंडरस्टैंड कि कौन कौन से कंपोनेंट्स क्रिएटिविटी में दिखते हैं. सो वेरी फर्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्रिएटिविटी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी ही चाहिए. एक ही थॉट पे नहीं अटका रहता है. इट इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर थिंग. ओरिजिनल होना चाहिए. सो अगेन न्यू, नॉवेल एंड समथिंग डिफरेंट, कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ आइडिया. ऑल्सो elaboration, that is कि creative people have to elaborate their things. They have to think in a systematic manner, organize their details, and whether that particular idea is going to work or not, whether the implications or consequences are right or not, they have to elaborate upon it, they have to think about it, they have to critically analyze it. Next point is fluency. Fluency of thoughts are very much essential कि बहुत सारे ideas या problem solutions आए, rapid flow आने चाहिए. they can जो है already उसको easily quickly modify कर सके. So वो inclusiveness या वो impulsiveness particular person के अंदर होनी चाहिए, which is a part of or component of creativity. Then yes, it is sensitivity, that is they have that value or the uh, principle of thoughtfulness. So they are quite approachable to the problem, they make sure कि problem solve हो सके, and they see कि fault कहाँ पे है, कहाँ पे चीज इस तरह की है कि उसके अंदर सही करना ज़रूरी है, उसको resolve करना ज़रूरी है. So therefore they are quite
सेंसिटिव टुवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि जिसने भी कोई ऐसा वैसा सोल्यूशन दे दिया तो उसको वो एक्सेप्ट रेडीली नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज दे आर इनटू रीडेफिनेशन दैट इज रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम. सो जो प्रेजेंट आइडियाज है, जो एग्जिस्टिंग आइडियाज है या कॉन्सेप्ट या थिंग्स है, उसको क्लोजली वो लोग रीअरेंज करते हैं, प्रॉपरली रीअरेंज कर सकते हैं so that कुछ ओरिजिनल निकल सके. So they transform the things which are already present into a different way. Say for example, a person presenting a dish in a very different manner compared to the regular manner. So that is redefinition. So this is how new rearrangement of old ideas, विच इज द कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी. क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया एकदम न्यू थिंग बनाना भी क्रिएटिविटी है, और जो ओल्ड है उसको न्यू तरह से प्रेजेंट करना, डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करना इज ऑल्सो क्रिएटिविटी. देयरफॉर रीडेफिनेशन. एंड फाइनली क्रिएटिविटी इज ऑलवेज utility based. So it is something which is not vague, something which is not ambiguous. It is always कि उसको useful होना चाहिए, and useful for not only the individual but for the whole society. So anything which is useful but useful के बदले एक ही individual के लिए useful है, then I think it should not be a creativity. Creativity is something which is clear, which is comfortable and which is useful for everyone. So it is utility based. So these are few of the components of creativity, that is flexibility, originality, elaboration, उसको आप expansion भी बोल सकते हो, fluency, sensitivity, redefinition and utility. So I hope these components are okay. Let us proceed to the other part of creativity. Now let us see the process of creativity. क्योंकि creativity art है, पर उसमें भी सिस्टमैटिक कुछ होना चाहिए. सो देयरफॉर वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी इन द कमिंग स्लाइड्स. और ये प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स या फेजेस कह सकते हैं या स्टेजेस कह सकते हैं. सो दोज 4 इंपॉर्टेंट stages of creativity are preparation, incubation, illumination, and the last stage is nothing but verification. तो ये चारों stages of creativity under the process of creativity या फिर phases of creativity या फिर steps of creativity हम पढ़ेंगे आने वाले coming slide में in detail. So these are the process of creativity part, that is preparation, incubation, illumination and verification. So let us see the details about it from the coming slides. So now let us see each of the step of creativity one by one. तो first stage या process of creativity के अंदर first phase of creativity is nothing but preparation. So preparation as the word suggests, यहाँ पे person prepare करता है to find out the solution of the problem. So this is a logical stage of preparation where the person is ready to solve the problem with the help of creative and regulated thought. तो यहाँ पे the person is totally engrossed in solving that problem. वो अपना mentally पूरा focus होता है, वो अपना time, experience, सारी चीजें देता है to solve the problem in a new way, in a different manner. Continuation. It is a period of study. The person defines the problem, attempts to relate various factors, look at various different sources and gather number of information. It is like he is organizing the data and then brainstorming it to formulate different ideas and to produce relevant solution. So creativity में भी preparation stage पे यहाँ पे person completely समझता है problem को एंड उसको रिजॉल्व करने के लिए डेटा गैदर करता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, हाइपोथेसिस फॉर्म करता है, प्रूव करता है हाइपोथेसिस कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा. कंटिन्यूसली ही इज थिंकिंग इन अ डिफरेंट मैनर, डाइवर्जेंट मैनर एंड मेकिंग श्योर कि कुछ नया कुछ बाहर आए. ही इज गिविंग हिमसेल्फ अ कंप्लीट फ्रीडम टू ब्रेनस्टॉर्म the various aspects of the problem to find out the various solutions and to find out the relevant best creative solution for that particular problem. So this is the preparatory stage जहाँ पे extreme काम करता है एक creator to work on that particular problem or a particular thing which he wants to be highly creative. So अगर आपने Archimedes की सुना होगा
कि how he is continuously thinking about the problem which the king has given to him and is trying to solve it. So this is the very first stage जहाँ पे person prepare करता है अपने आप को to solve that problem, find out करता है बहुत सारे solutions किस तरह से, he uses his brain, his intelligence as well as creative ideas, flexibility, originality, सब चीज़ यहाँ पे वो use करना शुरू कर देता है. I hope this is okay. Let us proceed to the second stage of creativity. Okay, the second stage of creativity is nothing but incubation period. It is a period जहाँ पे क्या होता है कि ideas या फिर जो information takes shape in the subconscious mind and is not directly observable. This is a period of no evident activity or progress. Now please understand यहाँ पे क्या होता है कि person के ideas ये सब एक्चुअली कॉन्शियसली बंद कर देता है बिकॉज प्रिपरेशन स्टेज पे उसने बहुत काम कर लिया है. दैट मीन्स इवन आफ्टर कॉन्स्टेंटली एंड अनटायरली वर्किंग ड्यूरिंग द प्रिपरेटरी स्टेज द इंडिविजुअल इज अनेबल टू गेट द एग्जैक्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो अभी तक उसको सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं मिला है दो ही वॉज वर्किंग वेरी हार्ड एट द फर्स्ट स्टेज दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज. तो अभी क्या होता है वो सोच लेता है कि नाउ आई विल नॉट लुक एट दिस प्रॉब्लम, आई एम टायर्ड, एंड वो consciously he decide करता है कि he will not work towards that particular problem. Therefore, reaching at this second stage, he is experiencing frustration and now he is consciously abstaining, that is taking a break away from the problem. वो distract कर देता है अपने आप को, दूसरी चीजें करने लग जाता है from thinking about the problem and directs his attention towards other things. So completely withdrawal to think about that problem वो कर देता है because now he's extremely tired, frustrated कि इतना करने के बाद भी solution नहीं मिला है. So therefore this is a stage where it is called कि consciously तो वो बंद कर देता है but subconscious mind उसका कहीं ना कहीं continuously work कर रहा है कि कौन सा नया तरीका, कौन सा different creative idea use कर सकते हैं to resolve this problem. Fine. Continuation. This halting of the conscious thoughts lead to a series of unconscious mental events to solve the problem. तो जैसे कि कहा कि unconsciously mind solve करने लग जाता है problem क्योंकि consciously तो हमने कोई बोल दिया है कि we will not work in that direction, but mind is continuously working, thinking about that problem and how to resolve it in a proper way. Incubation increases flashes of insight and the chance of producing a correct solution by replacing the old solution plan by a new improved plan. तो यहाँ पे in this particular incubation period, because of uninterrupted mental relaxation, a complete essential move हो जाता है towards illumination. That means कि because of this relaxing period क्या हो जाता है incubation के time में, पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड अपने आप वर्क करने लग जाता है और उसका जो ओल्ड आइडिया जो उसने शायद प्रिपरेटरी स्टेज पे सोचा होगा उसको कम्प्लीटली रिप्लेस करके नए आइडियाज की तरफ मूव हो जाता है, विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल और एक अच्छा इम्प्रूव्ड प्लान या आइडिया हो सकता है. सो देयरफॉर दिस इंक्यूबेशन पीरियड इज़ वेरी मच एसेंशियल इन अ पर्टिकुलर क्रिएटिविटी प्रोसेस. सो जैसे कि हमारे साथ भी होता है कि different ways से solve करने की कोशिश की but it is not happening, then we move ahead, we stop doing that particular activity, but unconsciously वो हमारे mind में चल रहा होता है कि how to resolve that particular thing and all of a sudden हमें कहीं ना कहीं वो strike हो जाता है okay this is how we can resolve. So therefore this incubation period is very much essential for the process of creativity. Now let us move towards this third stage of creativity. Now, what can you see in this particular picture? Yes, very true, light bulb. So Einstein ने भी ये बल्ब बहुत सारे मिस्टेक्स के बाद निकाला है, इन्वेंट किया था. तो सिमिलरली क्रिएटिविटी का स्टेज आ गया है थर्ड, दैट इज नथिंग बट इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन इज लाइक कि आफ्टर सो मैनी अनसक्सेसफुल सीरीज ऑफ एसोसिएशन फाइनली कुछ सक्सेसफुल की तरफ जा रहा है, ऐसा वो क्रिएटर को लगता है. So that is, it is at this third phase of creativity the person receives his or her aha or light bulb, or we can say जो आर्किमिडीज में था यूरेका मोमेंट, जहाँ पे he suddenly perceives the successful and clear connections या फिर associations of ideas arises
to consciousness to construct a fully materialized novel creation. So यहाँ पे at this third stage उसको clear आ जाता है idea कि अच्छा this is how we are going to solve the problem, this is how I am going to solve the problem. तो वो क्लियर एसोसिएशन देख सकता है, वो चीज़ों के बीच में कनेक्शंस देख सकता है और वो फुल्ली नया आइडिया डेवलप कर लेता है एट दिस स्टेज. This intense insight of new creation provides a sense of excitement in the individual. तो ये एक यूरेका मोमेंट होता है कि oh this is how I can solve. तो ये insight towards that problem and insight towards solving that problem in this particular novel manner, इससे क्या होता है naturally excitement person को feel होता है, joy as well as happiness and satisfaction. So this is a eureka moment जहाँ पे person को creativity का ये third stage is a place that is illumination, जहाँ पे उसको वो light bulb effect होता है कि ओके मुझे solution मिल गया है, एक creative solution मिल गया है and now we can work on that solution. So creativity का yes दो third stage पे solution कहीं ना कहीं मिल गया है but अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वर्क बिकॉज क्रिएटिविटी एज सेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज एज वेल एज क्रिटिकल थिंकिंग. सो कन्वर्जेंट थिंकिंग भी इसमें इन्वॉल्व है. सो लेट अस प्रोसीड टू द लास्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस in the coming slide. Okay, so now this is the last stage of creativity which is nothing but verification. अब verify करना बहुत ज़रूरी है कि वो idea सच में useful है, whether it is helpful to solve the problem in a creative manner, correct manner. So this is what is verification stage or phase about in the process of creativity, where revision, evaluation या elaboration of thought होता है कि final product जो है वो सही है कि नहीं है. It is the last stage in the development of creativity. At this stage, the individual polishes his creative ideas by critical appraisal, by reflecting and evaluating his idea. So he reflects back, he find out कि ये सच में सही चल रहा है कि नहीं, कहीं पे कोई problem तो नहीं है. So he uses his critical understanding, his understanding towards that particular problem, his intelligence, his idea which is right now seen, but whether it has been useful or not, whether it is going to be successful or not, उसको अंदर और polishing चाहिए, कुछ modification चाहिए, then he does it. It is fully conscious stage that involves the use of logic for verification. तो ये unconsciously नहीं है जो कि incubation period में था. इस स्टेज पे लास्ट स्टेज पे वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इज फुल्ली कॉन्शियसली द पर्सन इज डूइंग क्योंकि यहाँ पे लॉजिक इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है. द क्रिएटर एग्जामिन्स एंड वेरीफाइज द सोल्यूशन एज बीइंग वर्केबल और नॉट वर्केबल. ही और शी रिवाइजेस द सोल्यूशन एंड कैन ऑल्सो मेक चेंजेस टू मेक इट क्लियर एंड यूजफुल. So these are the things which are involved in the verification कि कहीं पे भी थोड़ी सी भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फाइंड आउट करें और उसको रिजॉल्व करें, बिकॉज एक बार आइडिया फाइनली उस तरफ चला गया इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तो शायद उसको वापस करना में प्रॉब्लम हो सकता है. श्योरली वो कर सकते हैं बट बिफोर दैट वेरीफाई कर लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो देयरफॉर logically person uses his mind to find out ki whether the work the idea is workable or not workable, is there any modification required, and whether it is useful or not useful. So this was about stages of creativity. All the four important stages we have discussed in the process of creativity. I hope you have understood. Let us proceed to the other part of the slide. Now it's time to see the four P's of creativity. जैसे कि if you have studied marketing, तो marketing के four P's होते हैं. Similarly, creativity के भी four dominant aspects हैं which are essential. So let us see four P's. Very first is it is a process. So creativity a cognitive process है where mind, brain is involved. We describe the details about what are the things required to think in a different way. So वो ideas generate करता है, different techniques use करता है mind to bring divergent thinking rather कि convergent एक ही तरह से सोचे. So it is a process. Creativity को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है. It is continuously way of thinking or generating new ideas. Then a product. So creativity क्या है जहाँ पे एक
relevant प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट निकल के आए विच इज सोशली यूजफुल, विच इज नॉवल, विच इज समटाइम्स एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग कि अच्छा ये भी प्रोडक्ट बन सकता है एंड इट इज यूजफुल टू द सोसाइटी. थर्ड पार्ट इज अ पर्सन. सो क्रिएटिविटी में नेचुरली अ क्रिएटिव पर्सन इन्वॉल्व है, जिसके अंदर ऐसा इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स है, बिहेवियर है कि वो दिखाता है कि इज रेडी टू चेंज, openness है, very flexible person to think, to generate new ideas, explore different things, and he has that particular divergent thinking in him. Now when I say him, it is him, her, everyone, ठीक है, where he makes sure कि उसका behavior, उसकी thought process, as we have already seen, creativity involves both thinking as well as action. वो दोनों चीजें क्रिएटिविटी को प्रोड्यूस करे, समथिंग क्रिएट करे, नई चीज. एंड द लास्ट पी ऑफ क्रिएटिविटी इज प्लेस. So yes, place is also very important. The environment which we provide to a learner, for example, is very much essential to generate, to give a push to his creativity, to make sure that that creativity does not only stay in his mind but it comes out. So it is like giving accessibility of resources and that particular congenial environment to the people, so that creativity is been manifested. So these are the 4 P's of creativity, that is creativity, a process, a product, a person, and a place. I hope till here it is clear. Let us proceed to the other part of creativity. तो अब हम क्विकली देखते हैं कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस क्या है. पहले इंटेलिजेंस देख लेते हैं. तो वेरी फर्स्ट इज इंटेलिजेंस इज नथिंग बट कन्वर्जेंट थिंकिंग. तो एक फाइनल आइडिया के ऊपर इंटेलिजेंस डिसाइड करता है कि दिस इज व्हाट इज द करेक्ट वन. देन इज इट इज नॉट एसेंशियल दैट इंटेलिजेंट पर्सन पोजेसेस क्रिएटिविटी, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है. ऑल्सो इन इंटेलिजेंस टेस्टिंग द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ कोग्निटिव बिहेवियर इज एम्फसाइज्ड. तो जब इंटेलिजेंस टेस्ट होता है तो कितनी फास्ट वो सोच रहा है पर्सन, एज वेल एज कितना एक्यूरेट है, उस पर ध्यान दिया जाता है. कमिंग टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी कौन सा थिंकिंग होता है? यस, वेरी राइटली से डाइवर्जेंट थिंकिंग. कि नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आने दीजिए, कौन से पॉसिबल ऑप्शन है वो आने दीजिए या अल्टरनेट्स आने दीजिए. इट इज हाईली क्रिएटिव पर्सन यूजुअली पोजेसेस एवरेज लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, जो हमने पहले भी देख लिया है. एंड क्रिएटिविटी टेस्ट नॉवेल्टी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी, जहाँ पे वेटेज ज़्यादा दिया जाता है इन सभी चीज़ों को, ना कि एक स्पीड या एक्यूरेसी देखे. तो नॉवेल्टी क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, हो सकता है वो थोड़ा एक्यूरेट नहीं भी हो, बट ओरिजिनल है, उस पर और थोड़ा वर्क करके उसको अच्छा किया जा सकता है. सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, a little bit difference between intelligence and creativity. I hope this is clear. Let us proceed to the other difference between creative thinking and critical thinking. Now let us discuss about the difference between creative thinking and critical thinking. So critical thinking के points देखते हैं. It is more evaluative in nature and analyzes a particular thing. तो more evaluate करता है, चीज़ों को assess करता है. Also it is analytical in purpose. तो logic use करता है and diagnose करता है particular things को या ideas को. Also, it is developing possibilities to compare and contrast many ideas and improve and refine ideas. तो compare करता है कि कौन सा idea सबसे अच्छा है, किस में modification कर सकते हैं ताकि improve कर सके ideas को. Also, it helps to make effective decisions and judgment. Now, because it is critical thinking, तो good, bad, right, wrong के बीच में difference पता पड़ जाता है individual को, and accordingly the individual take correct and right judgment as well as decision. And lastly, under critical thinking, it provides a sound foundation for effective action. तो एक base अच्छा बना देता है critical thinking for taking a correct action, for behaving rightly. So these are the part of critical thinking. Coming to creative thinking, it is having original ideas. So creativity is like looking at divergent ideas and new ideas. एक novelty लेके आना, ओरिजिनलिटी लेके आना. इट इज जनरेटिव इन पर्पस. जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग में हमने देखा था इट इज एनालिटिकल, वेयर एज क्रिएटिव थिंकिंग है कि नए और थॉट्स प्रोड्यूस करना और डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फाइंड करना. अंडर क्रिएटिव थिंकिंग इट इज मेकिंग कनेक्शंस टू थिंक
ऑफ मैनी पॉसिबिलिटीज। तो क्रिएटिविटी देखता है कि कितने और कनेक्शंस हो सकते हैं, कितने और तरह से चीजें रिजॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इट इज थिंकिंग ऑफ अनयूजुअल पॉसिबिलिटीज, समथिंग विच इज नेवर एक्सपेक्टेड। और वो नई चीज ढूंढना, सोचना का काम क्रिएटिव थिंकिंग करता है। Lastly, it provides guidance in creating as well as selecting alternatives by using both types of thinking, जो कि हमने पहले नेचर में भी देख लिया है। That is, creativity involves creative thinking as well as critical thinking, and we can say it is convergent thinking is always there under creativity, where कि प्रॉब्लम को फाइनली शॉर्टलिस्ट करके उसका बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है आउट ऑफ ऑल द अल्टरनेटिव क्रिएटिव सॉल्यूशंस, कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है वो लेना, एंड देन उसके ऊपर वर्क करना, एक्शन लेना। सो दीज आर द points under the difference between both creativity and critical thinking. I hope you have understood. Let us proceed ahead with the other part of creativity. ओके, तो अब देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है क्रिएटिविटी की इन दी लर्नर्स और जनरल इंडिविजुअल्स। दैट इज कि क्यों इम्पोर्टेंट है क्रिएटिविटी। लेट अस सी वन बाय वन। क्रिएटिविटी गिव्स बर्थ टू न्यू थॉट्स एंड आल्सो टर्निंग ओल्ड थिंग्स इनटू न्यू। तो एवरीवन शुड हैव क्रिएटिविटी एंड यूज देयर क्रिएटिविटी, बिकॉज नए आइडियाज जनरेट होंगे, नए एक्शंस होंगे एंड नई चीजें आएगी, एज वेल एज जो ओल्ड चीजें हैं उसको अलग तरह से करने का भी idea creativity देगा. So there are times, number of times teachers are doing same continuous teaching same content continuously for number of years, but when they have creativity they'll bring novelty in each and every lecture of them related to the same content. So therefore it is always creativity is required for everyone, not only learners but everyone, so that they bring something new on the table. Next is creativity is the act that turns the new and imaginative ideas into reality. तो creativity होगी तो इंसान वर्क करेगा, एक्शन में लेगा वो काम, एंड फाइनली वो रियलिटी बन जाएगी. सो इट विल नॉट बी इन इमेजिनेशन या कोई फैंटेसी नहीं है, वो एक्चुअली रियलिटी बन जाएगी. सो देयरफॉर क्रिएटिविटी इज ऑलवेज असेंशियल. सो राइट फ्रॉम बिगनिंग जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं ह्यूमन एवोल्यूशन में, all these things, very first someone have thought creatively, and then it was been implemented, worked upon, and finally वो आज reality है. And we all are using number of technological things, number of inventions, number of we are reading number of stories, poetries, we are seeing number of dance, various other activities where creativity is involved. So therefore creativity शुरू होगी and then end होगी reality पे. Next point is it helps to perceive the world in new way and find hidden patterns to make connections between seemingly unrelated phenomena and generate solutions. So because of creativity होगी तो वर्ल्ड को एक अलग तरह से देखने का नजरिया भी आएगा. द एटीट्यूड समटाइम्स कैन completely change when the person has creativity, and that will help him to make connection, to link each other, to link something which is completely unexpected and generate new ideas. So therefore we are very much necessary, it is very much necessary to have creativity. It is a kind of fantasy in which new ideas are promoted, and that new ideas are essential to the advancement of human society. So, as said earlier, creativity is very much essential for the growth and development of not only a particular individual but whole society, whole globe. So, therefore, creativity is very much essential in all walks of the life, which we have already discussed earlier. Then point is it acts as a means for expression. So जो creativity में involve है, any creator, say for example एक student है, उसको आपने drawing करने के लिए बोला. So when the student is involved in doing that particular activity, he creates that particular a drawing, and then he feels so gratified, so happy, satisfied, and he completely expresses himself in that particular drawing. So creativity may a person can express very effectively. It can be drawing, it can be anything, elocution, anywhere where creativity is involved. It can be solving a particular problem in a different manner, preparing a project, all these areas, सभी में creativity में
expression involved है, and when expressions are involved, naturally the whole personality of that person is reflected on it, and the person feels happy. So therefore creativity is essential. Also, in this era of working towards sustainability, it is essential for the students to develop creativity and apply it for sustainable environment. सो हर एक फील्ड में क्रिएटिविटी चाहिए, नेचुरली एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए भी क्रिएटिविटी चाहिए. आई होप यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट विच इज implemented in India, which is an ongoing process or project. So these type of projects are built up to make sure that sustainable environment rahe. Also sustainability not only with respect to environmental sustainability, with respect to social sustainability, with respect to economical sustainability, economical growth भी हो, societal भी grow हो, society भी grow हो, culture भी grow हो. So therefore everywhere creativity is very much essential. And the last point under the importance of creativity, it is very necessary on part of the teacher to bring out innovativeness in the learner. So creativity होन चाहिए ही हर एक लर्नर के लिए. Therefore it is very much important कि teachers creativity दिखाएं, students को help करें. Teachers used various टॉय बेस्ड पेडागोजी जो अभी रिसेंटली नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले से था बट अगेन नाउ एनसीईआरटी is asking people, teachers to use toy-based learning pedagogies, also creating new different games using different methodologies and making sure the lesson is interesting and bringing that creativity in the learners. So therefore creativity is important because these learners are going to be the future citizens of the nation as well as the global world. So to bring peace, to bring novelty in the nation, to make sure that the whole world peacefully survives as well as live together, grow together, develop together, every person has to be creative. So these are few of the points on the importance of creativity. Let us proceed towards the role of teacher under creativity. So as said earlier, each person is creative. And when we talk about specifically with respect to students, all our students have inborn creativity in them. But major thing is that creativity is innate as well as environment. तो एक अच्छा environment provide करना जिससे कि उनकी creativity को reinforcement मिले, वो काम teacher का है. Fine. So therefore from this slide we are going to discuss about the role of teacher in promoting creativity in the learners. So हम बहुत सारे areas में बात करेंगे. हम रोल ऑफ द टीचर तो देखेंगे ही, साथ ही साथ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी देखेंगे, वेरियस एक्टिविटीज विद द टीचर कैन डू. ये सारी चीजें हम देखेंगे अंडर दिस रोल ऑफ अ टीचर इन प्रमोटिंग क्रिएटिविटी इन लर्नर्स. सो लेट अस स्टार्ट. So let us start discussing the guidelines or the rules which the teacher should follow to foster creativity in their learners. Very first is having readiness to be creative and to be a learner. So teacher has to be creative by herself or himself. टीचर क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट लेगी. टीचर अगर खुद ही अपने आप को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर समझेंगे, देन नेचुरली स्टूडेंट्स विल ऑल्सो be encouraged to use creativity. So that is कि टीचर को इनोवेटिवनेस दिखाना चाहिए इन देयर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज. कोई भी सिंपल एक्टिविटी को वो क्रिएटिविटी यूज करके बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते फॉर द स्टूडेंट्स. So this will help students also to develop creativity. Next point is teacher has to be a good reader. सो उनको रीड करनी चाहिए बहुत सारी क्रिएटिविटी से रिलेटेड बुक्स, वेरियस अदर बुक्स एज वेल एज दे नीड टू बी वेरी वेल अपडेटेड अबाउट द थिंग्स और methodologies, pedagogy of teaching, soft skills and various other things so that they can showcase their creativity in their classroom teaching learning activities to their learners. Next point is lot of patience. So teachers has to have patience because when you want to foster creativity in the learners, there will be time कि वहाँ पे आपका open mindedness चाहिए, आपका readiness to accept change from the students, readiness to uh,
accept questions from the student वो होना चाहिए, and also to manage and control your classroom as well as students, because sometimes if you lose patience then it might be time कि आपको frustration आ जाए, because you are developing creativity in the learners. Sometimes you organize a particular activity जिसमें शायद बच्चे शोर कर रहे हैं, and then you have to manage the classroom. So till the time you have the skill of managing the classroom, managing yourself, tolerating, and having patience, the things will not work. So therefore, lot of patience is required, open-mindedness is required, and managing power is required. Tolerance is required in the teacher. नेक्स्ट इज बी रिस्पेक्टफुल. नेचुरली टीचर्स को रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है. तो क्रिएटिविटी में भी टीचर्स को स्टूडेंट को रिस्पेक्ट देना है, उनके इमेजिनेटिव थॉट्स को रिस्पेक्ट देना है, एंड नॉट टू क्रिटिसाइज कि अरे ये कैसे हो सकता है. सी ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट ही है कि आप जितने भी ब्रेन में आइडियाज आ रहे हैं उसको आने लेके आने दीजिए, उसको डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं करना है. लेट द थॉट्स कम. So therefore it is ki be respectful to the your children's or your students thought. Let them think imaginatively and answer to your questions or give solutions to the problem in very various ways and in various divergent ways. Fine. Next point is show to the pupil that their ideas have value. So you as a teacher has to be aware that स्टूडेंट्स को जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे, रीइंफोर्स नहीं करेंगे, आप आपका वो दिखाएंगे नहीं कि यस यू वैल्यू देयर पर्टिकुलर वर्क और आइडिया, दे विल फील वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. सो इट्स ऑलवेज लाइक दैट. थ्रू योर बिहेवियर, थ्रू योर एक्शंस, ऑलवेज मेक श्योर कि आप अगर बहुत ही एक्सट्रीमली रॉन्ग है देन यस यू कैन हेल्प देम टू अंडरस्टैंड वेयर द मिस्टेक इज. Otherwise, have that readiness, give the students freedom, and value their ideas. Next point is encourage and evaluate the self-initiated learning with cause and consequences. अब स्टूडेंट्स को ही उनकी लर्निंग जो हुई है, आइडियाज जो है, उनको इवेल्युएट करने के लिए फ्रीडम दीजिए. लेट देम थिंक. यू डू नॉट डायरेक्टली से नो दिस विल नॉट वर्क. लेट स्टूडेंट्स ओनली रियलाइज. तो इसके लिए भी टीचर को काम करना है. Next point is proper stimulation and nurturing environment. This is the last point under the principles of fostering creativity in the learners. अब यहाँ पे टीचर को ये हमेशा याद रखना है कि एक ऐसा conducive environment provide करें where students are ready to express themselves, ready to be flexible, ready to get some time, and they can showcase their originality without any fear. एंड बाय डूइंग सो टीचर शुड जस्ट टेक केयर कि उनको वो टाइम पीरियड दे टू थिंक. ओके, इट इज ऑलवेज कि हम टीचर्स जाते हैं क्लास में और बताने लग जाते हैं दिस 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 डू दिस 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 हाउ एंड एवरीथिंग. Let us give time to the children to think. Let students think by themselves, do the work by themselves, and yes, you can sometimes also reward them, award, you can appreciate their work so that they feel happy with their creative work. So these are few of the principles to foster creativity in the learner. Let us proceed to the other part under the role of teacher. Let us now discuss about the role of a teacher in promoting creativity in learners. तो टीचर क्या क्या करेंगे ताकि स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एनकरेजिंग इंटरैक्शन. तो जितना हो सके एनकरेज करिए इंटरैक्शन रिलेटेड टू द कंटेंट यू वांट देम टू डेवलप क्रिएटिविटी इन. Interaction with you, interaction with their own classmates as well as friends. Next point is working according to the mental level. तो creativity is like कि intelligence भी होना चाहिए. So as per the mental level of the students, and yes it has to be little bit challenging. तो ऐसा work दीजिए जो student के mental age को पास में हो as well as little थोड़ा challenging हो so that they are interested to do that work in a creative manner. अवॉइडिंग इमिटेशन. तो टीचर को इस तरह के प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स या एनी अदर वर्क देना चाहिए which make sure कि students do not copy from each other and they genuinely work towards giving their own ideas, putting their own thoughts and creating a new thing related to whatever work you have given. Next point is developing flexibility and risk taking. So you as teacher, we as teachers have to develop flexibility in the learners. It's always like कि एक ही solution नहीं निकलता है हर एक problem का. There are number of ways to solve a particular problem. So encouraging divergent thinking and yes also bringing that particular
attitude of taking risk by giving them freedom to do mistakes and resolve those mistakes by themselves. Next point is using ICT tools. So now in this era, it is very much essential for teachers to make use of various information communication टेक्नोलॉजी टूल्स इन their फील्ड ऑफ एजुकेशन. सो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो क्रिएटिविटी को एनकरेज करते हैं, एनहांस करते हैं, नॉट ओनली इन टीचर्स बट यस also in students. So participating in those ICT based activities will actually enhance creativity in the learners. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट. तो टीचर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे जहाँ पे कंडीसिवनेस तो हो, साथ ही साथ लिटिल चैलेंजिंग भी हो. लेट द स्टूडेंट्स डू वेरियस एक्टिविटीज, गेट इन्वॉल्व इन वेरियस methodologies of teaching, like we can say cooperative learning, like we can say constructivism, where they own create their own knowledge. They are not dependent on teachers for giving them or spoon feeding them with each and every part of that content. So therefore creativity ऐसी होनी चाहिए, environment ऐसा provide करना चाहिए where it will enhance the innovativeness, something to do in a new and different manner, वो स्टूडेंट्स के अंदर एनहांस करने का एनवायरनमेंट टीचर को देना चाहिए. So these were the roles of teacher in promoting creativity in the learner. Let us continue the content in the next slide. So let's continue the role of teacher in promoting creativity in the learners. Next part is learning and applying innovative pedagogical methodologies. तो creativity teacher के अंदर कब आएगी? When she is a good reader, she participate in various workshops, seminars, conferences, जहाँ पे somewhere they learn new things, new pedagogy, new methodologies of teaching, of preparing various learning resources so that they can bring creativity in the classroom as well as directly to their learners. Making use of new assessment techniques. Now it is very much essential कि खाली teaching learning में ही नहीं, beyond teaching learning, that is evaluating, testing, formal assessments जो होते हैं. Also why not summative assessment? इन सब में creativity लेके आए teacher, अलग अलग techniques से assess करे so that students are happy to answer those questions. They are very much motivated to express themselves for the answer. So directly जो रट के आए हैं, they will not put those answer. आपने questions ही ऐसे बनाए हैं application based where they are able to show their thoughts related to that content. So this is very much essential कि आप assessment techniques लाइए नई नई. Also ICT को use करके भी अलग अलग तरह के assessment हम कर सकते हैं. Next point is making use of number of puzzles, riddles, mystery plots, storytelling. ये अलग अलग activities टीचर करेंगे तो naturally students will develop their creativity. आप students को बोलिए story form करने के लिए, give a theme, let them form a story. Let the students play music while learning a particular content. So you can bring lot of creative activity in the classroom and motivate students to be creative. Providing open-ended questions. Now it is very much essential कि हम teacher student से question करें, because when we question naturally वो क्या करेंगे? Surely they will think. So before responding to your question they will think, or thinking will help them to promote and go towards both type of thinking, creative as well as critical convergent thinking. So therefore we need to have questions which are not close-ended. It is always open-ended question where they can express themselves. Next point is developing good interpersonal rapport. So it is very much essential कि teachers का rapport अच्छा होना चाहिए students से. अगर rapport अच्छा होगा तो naturally students are ready to question you, students are ready to add upon your thoughts, and students are ready to express their thoughts, their creative ideas in the classroom. Lastly, प्रोवाइडिंग फ्रीडम एंड सपोर्ट. तो नेचुरली हमने इसके बारे में बहुत बात कर चुके हैं कि यस टीचर को वो सपोर्ट और फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है. टीचर को मैनेज करना है क्लासरूम को, टीचर को हेल्प करना है स्टूडेंट्स की क्रिएटिव आइडियाज़ के अंदर, स्टूडेंट्स उस पर वर्क करें एंड डेवलप करें. सो देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज अ गुड एनवायरनमेंट इज़ प्रोवाइडेड, अ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग फियर्ड फ्रॉम द टीचर.
So these are the points under the role of teacher in promoting creativity in learners. I hope this is clear. Let us proceed towards कौन सी activities teacher कर सकते हैं for promoting creativity in the learners. So let us start with that. Let's see the activities to promote creativity in the learners. Very first is giving opportunity to the students to brainstorm. तो teachers अपने particular problem दे सकते हैं content related या एक particular question put forward कर सकते हैं for them to think in a divergent manner. Teacher can give a case study to the students to think in extremely divergent manner and use their creativity to resolve a particular case or a problem. Next is attribute listing and changing. Over here, the teacher asks students to list down the attributes of that particular ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज को पूरा लिस्ट करें. अब उसमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या नया लाना है, कौन सी डिज़ाइन डालनी है. सो ये क्रिएटिव अल्टरनेट्स को इमेजिन करने के लिए स्टूडेंट्स को कहें. दिस विल श्योरली प्रमोट क्रिएटिविटी. ऑल्सो गिविंग number of opportunity to solve puzzles, to make sure they also create puzzles. 7 piece puzzles आप उनसे solve करा सकते हो. न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे क्रॉसवर्ड पजल आते हैं, वो उनसे सॉल्व करवा सकते हो. दिस विल surely open creativity in them. Then is riddle construction and riddle solving. So you can give them creative ideas so that they can actually construct their own riddles instead of directly copying और you asking them to a particular riddle. आप वो भी दे सकते हो. Apart from that, ask them to make their riddles. So this will develop creativity in them. Next point is questioning. So questioning promotes divergent thinking. तो हर तरह के questions, open ended questions पूछिए आप. कहीं ना कहीं उसके connection से based question पूछिए, उनके assumption से related question पूछिए. किस तरह से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर किस तरह से वो फ्यूचर में किस तरह से हाउ टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल श्योरली प्रमोट extreme divergent ideas as well as make sure students understand कि उनके पास एक particular चीज के लिए कितने variety of responses है which can be utilized to resolve that particular problem. नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस सिचुएशन. तो टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर ये चीज़ होगी तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. तो लेट देम फाइंड आउट, लेट देम बी अवेयर द वेरियस इम्पॉसिबल सिचुएशंस आप दे सकते हैं एंड उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं, विच विल श्योरली क्रिएट देयर क्रिएटिविटी. स्टोरी राइटिंग, ऑल्सो पोएम राइटिंग, इसका स्टूडेंट्स को आप अपॉर्चुनिटी देके surely there will be a time that students will use their imagination to construct a beautiful story as well as to use various rhyming words and different ways to express the poems on the given title or their own title they can express. नेक्स्ट इज मल्टीपल यूजेस. तो चिल्ड्रन को बोल सकते हैं आप कि लिस्ट करिए यूजुअल एंड अनयूजुअल यूज ऑफ वेरियस डिफरेंट डे टू डे ऑब्जेक्ट्स विच दे आर यूजिंग. से फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर के डिफरेंट यूज क्या है अपार्ट फ्रॉम रीडिंग. से फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्टी पेन है या फिर एक पर्टिकुलर स्क्रू ड्राइवर है या हैंकरचिफ है, उसके डिफरेंट यूजेस क्या है which will promote creativity in them. Then is asking students to list as many as words as possible which they can associate with each topic headings. Say for example like size, colors, feelings. तो उससे associated कौन सा particular word आता है उनको associate करने के लिए कह सकते हैं to promote creativity. Asking students to think of analogies and relate as well as classify things. तो analogies is very different beautiful way of enhancing creativity. आप students से पूछ सकते हो various different analogies or create various different analogies. Say for example, doctor is for patient, तो teacher is for home. So let students think about and answer the analogy, and also they can create their own analogies and develop creativity. Then is providing opportunity to redesign the old materials and make best यूज ऑफ इट. तो टीचर को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने के लिए स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए
टीचर को बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए where students think in a creative manner and create something novel. It can be in form of art, it can be in form of any other particular thing which will be useful for them as well as everyone. Next point and the last point under the activities is collect anecdotes from storybooks from various epics. So give opportunity for the students when they are reading, they can make a diary, they can form and collect various anecdotes जहाँ पे उनको लगे कि अच्छा ये पर्टिकुलर एपिक स्टोरी में या ये पर्टिकुलर कल्चर या लिटरेचर में उनको कुछ अलग दिखा, कुछ क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट दिखा, मे बी विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट्यूम, मे बी विद रेस्पेक्ट टू सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. तो वो जो कभी सोचा नहीं था इस तरह से भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, and over there in the story they have gone through it, so they can just make the anecdotes and slowly and gradually जब उनके साथ भी कभी by chance ऐसा होता है, they can put their thoughts, they can work on it. So these are few of the activities which the teacher can do to promote creativity in the learner. Let us proceed to the other part of creativity. So in the previous slide we have seen the various activities which teacher can organize. अभी थोड़ी सी guidelines देख लेते हैं to organize these activities. Very first is activities must be open-ended leading to number of possible responses. तो ऐसी activity दीजिए as teachers कि students के अंदर वो बहुत सारे ideas develop कर सके. ऐसा नहीं कि रिजिड एक्टिविटी दे दी, रिजिड क्वेश्चन दे दिया कि उसका एक ही सोल्यूशन है. एक्टिविटीज ऐसे फॉर्म करिए कि दे कैन डू इट एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर थिंकिंग, promoting flexibility in their thinking. Next is activity should develop students abilities. ये सारी abilities students के अंदर develop करनी चाहिए because ये सारी abilities हमने जैसे पहले देख लिया है कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग को हेल्प करती है डेवलप करने के लिए. सो देयरफॉर ओरिजिनलिटी, इंक्विजिटिवनेस, परसिस्टेंसी, ऑब्जर्वेशन, एलॉबरेशन एंड सेंसिटिविटी टू द प्रॉब्लम एज वेल एज एम्पैथेटिक बिहेवियर, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होनी चाहिए through the activities which you are organizing that will create creativity in their minds. Next part is activity must develop imagination and must not insist on a stereotype behavior. तो as usual जो सालों से कर रहे हैं वही behavior ना करके activities ऐसी plan करिए, different novel activities plan करिए which will promote creative imagination in the students and they can work on that imagination part and put it in the action. Next part is activities can be from the models developed by creativity researcher और from the teacher's own creativity. तो बहुत सारे standardized models develop किए हैं, उनके proper steps है. say for example concept attainment model है, inquiry training model है, ये सारे भी teachers use कर सकते हैं या फिर teacher खुद अपने कोई creative thought बना के creative activities plan कर सकते हैं and उसको implement कर सकते हैं in the classroom. So these are few of the guidelines to organize creative activities. Let us proceed to the other part of creativity. Okay, this is the last slide before the questions. So ways to promote creativity देख लेते हैं. So it's both curricular, co-curricular, cultural, हर तरह की activities teacher organize कर सकती है to promote creativity in learners. So that is curriculum में इस तरह की सभी एक्टिविटीज़ टीचर को रखनी चाहिए, इतना टाइम देना चाहिए और रूटीन वर्क के अलावा कुछ नया करने की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए स्टूडेंट्स को. Next point is freedom to respond. So students should not get feared and they have that particular freedom to take the responsibility of their own learning and if by chance mistake हो गए तो they can think about it and resolve. तो वो freedom students को देनी चाहिए, teachers को ego involvement दीजिए, opportunity for ego involvement कि ये अगर आपने किया है तो your name will be involved, your name will be written या you will be appreciated या आप student को appreciate करिए in front of everyone. This is required to promote creativity in the learners, encouraging originality and flexibility which is very much essential to bring creativity in the learner. रिमूवल ऑफ हेजिटेशन, नेचुरली अगर आप फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो हेजिटेशन, वो फियर स्टूडेंट से हट जाएगा एंड दे विल श्योरली डेवलप देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दे विल डेवलप द सेंसिटिविटी टू वर्क टूवर्ड्स दैट प्रॉब्लम इन अ न्यू एंड डिफरेंट मैनर. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स. तो हमने ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज देख ली है वे टीचर कैन मेक यूज ऑफ वेरियस स्पेशल वेज ऑफ
और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज लाइक प्ले वे मेथड हो गया, टॉय बेस्ड लर्निंग पेडागोजी टीचर यूज कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस स्टडीज दे सकते हैं, आप सर्वे मेथड करवा सकते हैं, क्विजेस यूज कर सकते हैं टू मेक श्योर स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी इज एनहांस. Developing and using innovative learning resources. So yes, teacher can develop innovative learning teaching aids. Also ask students to do so. Next point is making sure using teaching models. तो different teaching models will enhance creativity like जैसे कि है एक ब्रूनर्स का कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है जहाँ पे बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट देखे जाते हैं कंटेंट के और दैट पर्टिकुलर थिंग के एंड देन स्टूडेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू थिंक बाय देमसेल्फ एंड give more examples related to it. Then a such means inquiry training model use कर सकते हैं where you are giving students the opportunity to think, to inquire and to ask questions and come to the correct answer. Next point is providing self examples and ideas. तो teacher self example दे सकते हैं by themselves using creativity in each and every part of their profession, which will motivate students ki okay, my teacher is showing so much creativity, I can also be creative. So it will help students to get encouraged and motivated जब टीचर खुद ही अपने आप में एक role model है related to creativity. Next is work in collaboration with creative teams. So teacher can have cooperative learning technique, can make use of various cooperative strategies, cooperative learning strategies to make sure कि students एक साथ मिलके creativity एक दूसरे से सीखे समझे and group में work करके वो particular काम complete करे. Next point is providing appropriate opportunities. So teachers can provide various different opportunities to learner and create an environment not only in the classroom but different areas of the school, that is maybe computer room, maybe library, maybe school ground, maybe laboratory जहाँ पे students अपने creative ideas दिखा सके. आप students को बाहर लेके जा सकते हैं visit के लिए where they will learn new different things related to creativity. मॉन्यूमेंट्स दिखाइए जहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी यूज़ की गई है. आप एकेडमिक से रिलेटेड वहाँ पे ऐसे प्लेसेस पे लेके जाइए where students understand okay this is how creatively everything can be expressed. use creative resources of the community. yes, community से experts बुला सकते हैं आप, resource persons बुला सकते हैं who will develop creativity in your learner. you can take them to the institutions where you can actually show how creatively the business person, the other people are working in that particular industry or in that particular area. Lastly, reforms in evaluation system. Now it is very much essential जो कि हमने पहले भी देख लिया. Let us bring something new in the assessment part of the students. So we can make use of worksheet, we can make use of quizzes, we can make use of lot of ICT based resources to use them in evaluating our learners and assessing our learners, which will surely work in enhancing their creativity and they will not get fear related to their assessment or evaluation. Rather, they will be interested to participate in that evaluation technique. तो आप कभी वाइवा ले लीजिए, आप कभी different ways of evaluation use करके, that is like using different multiple intelligence and वो multiple intelligence को ध्यान में रख के which we have seen in Gardner's theory, वो सभी type of multiple intelligence में से थोड़े बहुत जितने भी आप कर सके वो आप evaluation system में लेके आइए and accordingly evaluate your learners content knowledge or something related to their actual skills. So these are few of the ways to promote creativity in the learner. I hope overall हमने role of teacher in promoting creativity in the learner अच्छे से समझ लिया है. Now we are in the end of this creativity का complete presentation. Let us move towards few of the questions which can be asked in your examination related to this topic. So questions related to creativity किस तरह के आ सकते हैं. वेरी फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं. ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. क्रिएटिविटी इज असेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर. जस्टिफाई विद रेफरेंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी. तो डायरेक्टली आपको इसके बारे में लिखना है कि व्हाट इज क्रिएटिविटी एज वेल एज उसका इम्पोर्टेंस क्या है, दैट यू हैव टू एक्सप्रेस.
देन इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. सिमिलरली आपसे आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिएटिव एंड intelligence, creativity and intelligence. Then you have to write in detail. Then is explain the role of a teacher in promoting creativity in the learners, जो कि हमने बहुत डिटेल में दिया है. तो आप जो भी पॉइंट सुटेबल है आप उन सभी को मिला के एक अच्छा सा प्रमोटिंग क्रिएटिविटी इन द लर्नर्स का आंसर बना दीजिए. नेक्स्ट कमिंग टू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. तो शॉर्ट आंसर में कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी पूछ सकते हैं, तो जिसमें मीनिंग आपको लिखना है एटलीस्ट वन डेफिनेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, फ्यू ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. नेक्स्ट इज एक्टिविटीज टू एनहांस क्रिएटिविटी इन द लर्नर्स, जो हमने सेपरेटली भी पढ़ा है, तो यू कैन राइट few of those activities. बाकी और भी आप activities add on कर सकते हो. Now it is high time that I need to finish this content, therefore I have limited myself related to all these things, but फिर भी मैंने बहुत extreme depth में ये creativity का content बनाया है. I think so. So you can write number of activities which will enhance creativity in the learner as per the question asked. नेक्स्ट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स हैविंग क्रिएटिविटी. ये भी हमने एक अलग से इफ यू रिमेंबर ट्रेट्स ऑफ क्रिएटिव पर्सन या लर्नर लिखा था, तो यू कैन मेक यूज ऑफ दोज पॉइंट एंड ऑल्सो एड योर ओन पॉइंट्स एंड राइट द आंसर. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि आपको लिखना है रिलेटेड टू वाई क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड. एंड फाइनली कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी. कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी भी हमने देखे थे, तो वी कैन राइट देयर माइट बी टाइम्स की 4 P's ऑफ क्रिएटिविटी भी पूछे, बट यूजुअली वो पूछते नहीं हैं इससे रिलेटेड 4 P's ऑफ, दैट इज ऑल एडिशनल विच आई हैव रिटन. सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड, और इसी से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू क्रिएटिविटी. I hope this is clear. Moving towards the last slide of the presentation. So finally हम आ गए हैं लास्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन पे. लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड हमने क्या क्या पढ़ा इन दिस होल क्रिएटिविटी प्रेजेंटेशन. हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, कंपोनेंट्स, 4 P's एंड ट्रेट्स ऑफ क्रिएटिव पीपल, process of creativity, difference between creative thinking and critical thinking, difference between creativity and intelligence हमने देखा, importance, principles of creativity to be applied, role of the teacher, activities, guidelines and few of the questions हमने देखे. All these things were related to the topic creativity. So now let us conclude. Thus, creativity is to think and do something differently, and all students can develop their creative capacities when they get the access to rich learning environment that nurtures their creative development. So overall ये conclude करते हैं हम कि creativity is essential and it is present in all the human beings. Teachers के अंदर भी होती है, students के अंदर भी होती है, and teachers can surely give that nurturing environment to the learners which will promote creativity in them. I hope this whole presentation is useful to you. That's all from my side. Thank you and Namaskar.